Good day all of you. I'm Reena Mahajan and you're watching on English Oasis. आज की vocabulary, new words और द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का explanation begin करते हैं. The first word is intimated. Intimated means announced or state. किसी भी चीज़ को announce करना is that you are intimating somebody about it. Unveiled is reveal या disclose. Unveil करना किसी भी बात को is किसी के सामने बताना और उसको रिवील करना. कोई भी चीज़ जो आज तक किसी को पता नहीं थी, unveiling is उसको बताना किसी के सामने. Touted is endorse or praise for something. Pivot is focus or focal point. That is the main point of something. That can be the gist or that is the main point or the gist of something, central idea, theme of something is pivotal thing, right? Heft is influence. To influence somebody, किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालना is heft. Resilience is take quick action or strength. Helming is outline or shape. Helming is किसी भी चीज़ को outline करना, frame करना या फिर उसको shape देना, that is helming something. Shorn off is to have something important removed from somewhere. किसी भी चीज़ से किसी important चीज़ को अलग कर देना, right? The income tax department shorned off the old regulations and rules and slabs and made the new ones, implemented the new ones. That is shorn off. Rhetoric is lofty. Very boring is lofty. Outliers is detached from main group. किसी भी चीज़ को किसी भी main group से किसी को अलग कर देना is to outlie. Outliers. Chafe is to be angry or lose patience because of rules. कुछ ऐसे rules जिनकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है या आप अपना patience lose कर सकते हैं, तो that is chafe, right? Initiative is to take some step or to come forward to do something. You took the initiative of creating social awareness against the use of refrigerators and CFC gases or excessive use of air conditioners. So that is initiative लेना, किसी भी बात को आगे forward करना या फिर कोई step लेना against towards, right? So let's begin with the editorial section of today's newspaper, The Hindu. The title of the editorial today is Caution and Clarity on the US-led Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. This means there has been an Indo-Pacific Economic Framework, एक framework US जिसको lead कर रहा है वो बनाया गया है for prosperity for the betterment. And this article suggests कि caution means precautions क्या क्या हो सकते हैं और इसमें कमियां क्या हो सकती हैं और clarity देने के लिए, right? In a sudden decision not previously intimated, that is this decision was not previously announced, पहले ही इसको announce नहीं किया गया था, and now suddenly India has become one of a 13 nation economic initiative led by the US. India एक 13 nations वाले economic initiative को, initiative means plan, which the US is leading, Monday को India ने उसे join किया. As President Joseph Biden unveiled means he disclosed the plans for an Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. तो President Joseph Biden ने unveil किया इसे, disclose किया इस plan को, जो कि एक Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity है, IPEF. The initiative is touted means endorsed or praised as a substantial step, a great step by the US as part of substantial step means a side step by the US as part of its decade-old pivot is focus to Asia and an attempt at putting some economic heft, and they say that this is an attempt to put some economic influence into its Indo-Pacific presence that has been on the decline after its decision to quit the Trans-Pacific Free Trade Agreement. So US ने पहले Trans-Pacific Trade Agreement को क्विट करने का, उसको छोड़ने का सोचा, डिसाइड किया, और इसलिए now they have taken
this step in order to cope up with that. The CPTPP in 2017, officials say the IPEF framework has 4 pillars. Officials ये कहते हैं कि 4 pillars हैं इसके, यानी कि 4 main points हैं इस पूरे framework के. Supply chain resilience is the first one. That is, resilience क्या होता है? Strength. तो supply chain को बहुत strengthen करना, clean energy, decarbonization and infrastructure, taxation and anti-corruption, and fair and resilient trade. Resilient is again ever going on prosperous trade. So these are the 4 points that are going to be covered into this treaty. Mr. Biden's visit to Japan and South Korea, attendance at the Quad Summit, and helming is to direct or to steer the IPEF launch is also aimed at. तो मिस्टर बिडेन का जो जापान और साउथ कोरिया का विज़िट है और उनका प्रेजेंट होना क्वाड सबमिट में एंड डायरेक्ट करना IPEF लॉन्च को, ये ऑल्सो एम करता है इन रीअश्योरिंग द ईस्टर्न हेमिस्फेयर अबाउट द US फोकस. तो रीअश्योर करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में US का फोकस. India's joining is an equally strong statement of commitment to Indo-Pacific goals and to broadening regional economic cooperation. इंडिया का इसको ज्वाइन करना ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारी कमिटमेंट की तरफ टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक गोल्स, और सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है सारे IPEF मेंबर्स के लिए अदर देन इंडिया एंड द US are a part of RCEP free trade agreement and yet have chosen to be part of the US-led initiative, और US-led initiative का पार्ट बनने के लिए उन्होंने खुद चूज़ किया. Despite the strong signaling from all sides, however, there are many aspects of the IPEF that bear further scrutiny. तो इन सारी बातों के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं IPEF के जो कि स्क्रूटनी डिमांड करते हैं. स्क्रूटनी मीन्स कि हमें उसके प्रॉस कॉन्स और हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है. Monday's launch only signals the willingness of the 13 countries to begin discussions on the contours. और मंडे का लॉन्च सिर्फ एक सिग्नल है कि ये 13 कंट्रीज़ जो इस डिस्कशन को ज्वाइन करना चाहती हैं उनका आउटलाइन और शेप क्या है. मच विल डिपेंड एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्ट्रेस्ड ऑन हाउ इंक्लूसिव द प्रोसेस इज़. और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये स्ट्रेस किया है कि इस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये कितना इंक्लूसिव है ये प्रोसेस, इंडिया को इसका क्या फ़ायदा होने वाला और कितना इंक्लूड होने वाला इंडिया. सेकेंड, US officials have made it clear that it is not a free trade agreement. और US officials ने ये क्लियर कर दिया कि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, नॉर विल इट डिस्कस टैरिफ रिडक्शंस और इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस, और ना ही ये टैरिफ रिडक्शंस को या फिर मार्केट एक्सेस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा. रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट इट्स यूटिलिटी, और यही 2 चीज़ें हैं जो इसकी यूटिलिटी या फिर इसका फ़ायदा है या नहीं है इस बारे में क्वेश्चंस उठाते हैं. शॉन ऑफ, that is to have something important removed from. So shorn of the rhetoric is the loftiness of Indo-Pacific cooperation. ये Indo-Pacific cooperation बहुत ज़्यादा lofty हो गया था, boring हो गया था, dull हो गया था because nothing new was being done here. There must be more clarity on its framework. The 4 pillars also lend themselves to some confusion. और जो 4 main points उन्होंने बोले ऑफिशियल्स ने, वो भी बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. ड्राइंग इन टू क्वेश्चन वेदर देर इज़ इनफ कॉमन ग्राउंड अमंग द 13 कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमिक अरेंजमेंट. तो क्या ये 13 कंट्रीज़ इससे कुछ फ़ायदा उठा पाएंगी या इनको कुछ इकोनॉमिक फ़ायदा होगा. As well as outliers. Outliers is a person या thing attached from the main group, the US and India, to set standards together, और वो एक साथ standards set करें और be open to issues that vary from each country, या और फिर वो open करें issues को जो कि दोनों countries के लिए ही important है.
The US statement that the IPF is essentially focused on American workers. US की ये statement कि IPF American workers के ऊपर focus करता है also raises question on whether increasingly perfectionist global trends will shape, और ये इस चीज़ के ऊपर question उठाता है कि इंक्रीजिंग परफेक्शनिस्ट ग्लोबल ट्रेंड्स जो हैं वो शेप करेंगे मतलब उनके वो सही होंगे, लागू भी होंगे और या नहीं. ईच ऑफ द IPF कंट्रीज़ हैज़ कंसिडरेबल ट्रेड इंटरेस्ट इन चाइना. सारी ये IPF कंट्रीज़ को बहुत इंटरेस्ट है चाइना के अंदर, विद मोस्ट हैविंग लार्ज ट्रेड डेफिशिट्स, और इनमें से ज़्यादा कंट्रीज़ के बहुत सारे ट्रेड डेफिशिट्स भी हैं. सो इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ मच दे विल बी विलिंग टू साइन इन विद IPF. तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना विलिंग होंगे इस IPF के को साइन अप करने में. ऑलरेडी 3 एशियन कंट्रीज़, कंबोडिया, लाओस एंड म्यांमार, has decided to stay out of the framework's launch. 3 कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो इस फ्रेमवर्क से लॉन्च से दूर रहेंगी. दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम. आफ्टर ऑल, गिवन द फैक्ट दैट द US प्रीवियस इनिशिएटिव्स कौन से हैं? द ब्लू डॉट नेटवर्क एंड द बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव. ये दोनों इनिशिएटिव्स भी हैं जो हैं हैव बीन मेड लिटिल हेडवे इन चेंजिंग द रीजन्स इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स. ये बहुत ही कम काम कर पाते हैं रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को बेयर करने में. द IPF फेसेस अ क्रेडिबिलिटी चैलेंज. क्रेडिबिलिटी चैलेंज इज़ अगेन अ वेरी गुड फ्रेज़ कि ये पूरा प्रोग्राम IPF का एक चैलेंज को फेस करता है कि ये क्रेडिबल है या नहीं, ये सही है, फ़ायदेमंद है या नहीं. Negotiators will need to move. Negotiators are जो भी आपस में बातचीत कर रहे हैं. Move both caution and clarity before making any big promises on its benefit for the region. They would be taking more caution, और clarity की ज़रूरत है इसमें, बिना किसी आगे बढ़े हुए और अच्छे promises को करने के लिए for the benefits of the region. Thanks a lot. Meet you today in the next editorial section of the Hindu. Please subscribe to the channel, hit the bell icon so that you get the latest notifications as soon as possible, and do not forget to share this video with all your friends so that we all can learn English nicely and very confidently. Thanks a lot.